Ignited Minds Tutorials has uploaded a video covering the chapter of Agriculture for CBSE Class 8. It covers all the topics in detail. Please watch the video till the end to get a deep-rooted understanding about the topic. Okay, so एग्रीकल्चर वाला चैप्टर सबको है, राइट? बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे ये क्या हो गया? बहुत तकलीफ ओके पीपल विल स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में व्हाट इज ब्रेड एंड बिस्किट्स मेड अप ऑफ? बहुत सारे जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट ब्रेड एंड बिस्किट्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? व्हीट। ठीक है, आटे से बनते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, वेयर डू वी गेट व्हीट फ्रॉम? ऑब्वियसली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, गेहूं से बनता है भाई साहब, एग्रीकल्चर से बनता है। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. तो 3 तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं भाई साहब। ठीक है, these are primary, ठीक है, secondary and tertiary। ठीक है, तो आपका भाई साहब प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है भाई साहब? प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं एक्सट्रैक्शन, कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपके एक्सट्रैक्शन है और प्रोडक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज के, उनसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। ये आपके भाई साहब हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स का उगाना। ठीक है, सो क्रॉप्स को उगाना भाई साहब हो गया आपका एग्रीकल्चर। फिशिंग, ठीक है, फिशिंग इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ये एक टाइप का। ठीक है, एंड गैदरिंग, गैदरिंग मतलब फॉरेस्ट से आप जो चीजों को गैदर करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, अलग टाइप के प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, सो दीज आर नोन एज गैदरिंग। तुम्हारा स्कूल खुल गया है? कल खुलेगा। ओके, फिशिंग हो गया भाई साहब आपका। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ये जो रिसोर्सेज हमने गैदर की हैं इनको हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, वी बेसिकली डू इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे भाई साहब? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, weaving of cloth। ठीक है, tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services। ठीक है, आपको डाउट पूछना रहेगा बीच में ही पूछिएगा क्लास के, एकदम लास्ट में नहीं, जब मैं उधर लोगों को एंट्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो tertiary activities provided support to the primary and secondary activities through services। तो ये अपने अपने सर्विसेज से ये tertiary activities सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ tertiary activities जैसे आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, ये सब हो गया आपके टर्शियरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर जो है आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज बेसिकली अ प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग फ्रूट्स, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। जो लाइफ स्टॉक होता है मतलब आपका समझ लो ये गाय भैंस, ठीक है, इनका रियरिंग करना। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, rearing of livestock. In the world 50% of persons are engaged in agricultural activity। Almost 50% लोग जो हैं वो agricultural activity में engaged हैं। ठीक है, 50% of people are engaged in the agricultural activity। ठीक है, what is important for agriculture? Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity। ठीक है, तो favorable topography, ठीक है, आपका जो लैंड फॉर्म है वो फेवरेबल होना चाहिए, ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वैलिड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ओके, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। ठीक है, जिस लैंड पे भाई साहब क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एरेबल लैंड। दैट इज लैंड केपेबल ऑफ बीइंग प्लाउड एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, इसमें हम भाई साहब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। लेट अस नाउ हाउ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस्ड थ्रू अ सिस्टम नोन एज फार्म सिस्टम। तो हमारे एग्रीकल्चर का भाई साहब कैसे प्रैक्टिस होता है? ये ऐसे फार्मिंग लैंड्स होते हैं, यहाँ पे फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर इज मतलब देखो, अगर आपको व्हीट चाहिए रहेगा और राइस चाहिए रहेगा तो आप अपने घर के गमले में तो उसको लगा नहीं सकते हैं। ये बड़े बड़े फील्ड्स में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़े बड़े फील्ड्स में इन चीजों को उगाया जाता है बड़े पैमाने पे। ठीक है, फार्म सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। ठीक है, द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, ठीक है, देन वी हैव फर्टिलाइजर्स, देन वी हैव मशीनरी, then we have labor। ठीक है, all these are basically important। some of the operations involved are plowing involved होता है। ठीक है, then we have sowing, irrigation, ठीक है,
वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपके भाई साहब इन्वॉल्व होती हैं. सम ऑफ द ऑपरेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन फार्म सिस्टम. ठीक है, द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वुल, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड दीज थिंग्स. ठीक है, ओके. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. सारे जगहों पर भाई साहब फार्मिंग प्रैक्टिस होती है. ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये सब चीजों पे भाई साहब फार्मिंग होती है. फार्मिंग क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दो मेन टाइप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं फार्मिंग को. एक होती है भाई साहब आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है, और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, सो व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. बहुत कम पैमाने पे इसकी फार्मिंग होती है, मतलब फार्मर की जो पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, वो जो होती है उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी मतलब इसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर्स नहीं लगते हैं. ठीक है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हाउस होल्ड लेबर से ही ये काम हो जाता है. लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस द स्मॉल आउटपुट. ठीक है, स्मॉल आउटपुट भाई साहब इनसे हो जाता है. ओके, subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. ठीक है, एक होता है आपका intensive subsistence और दूसरा होता है आपका primitive subsistence. ठीक है, intensive subsistence agriculture it is practiced by farmers who have a small plot of land using simple tools and more labor. ठीक है, छोटा सा लैंड है प्लॉट, ठीक है, और उसमें आप सिंपल टूल्स और लेबर को यूज करते हुए फार्मिंग जब करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, ठीक है, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को बोलते हैं. ठीक है, तो मतलब दूसरे टाइप के क्रॉप्स भी आप साथ ही साथ ग्रो कर सकते हैं. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप. जब हम लैंड को यूज कर रहे हैं एक से ज्यादा तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो उसको आपको किस टाइप का फार्मिंग बोलते हैं आप, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, राइस इज द मेन क्रॉप. यहाँ पे भाई साहब राइस आपका मेन क्रॉप होता है. ठीक है, राइस इज द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड क्या क्या हो जाएंगे आपके, वीट, ठीक है, ठीक है, मेज, पल्सेस, ठीक है, ऑयल सीड्स. तो दीज आर द अदर क्रॉप्स दैट आर इंक्लूडेड. ठीक है, दीज आर द अदर क्रॉप्स दैट आर इंक्लूडेड. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. ठीक है, ये आपके मॉनसून रीजन्स हैं. दीज आर मॉनसून रीजन जिसमें इंडिया भी आता है. ठीक है, वेयर इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया में ये भाई साहब इंटेंसिव फार्मिंग होती है. ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव मतलब पुरातन, बहुत पहले के. ठीक है, तो इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. तो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होती है और नोमैडिक हर्डिंग भी होती है. नोमैडिक हर्डिंग मतलब जो ये बंजर तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जो लोग शिफ्ट होते रहते हैं. ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग. ओके, और फिर क्या, इट इज प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज. तो जो ट्राइबल लोग होते हैं जो एकदम रिमोट दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहते हैं, एक जगह पे रहते ही नहीं है, वो अपने गाय भैंस और बछड़ों के साथ भाई साहब एक जगह से दूसरे जगह कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वी कैन से इट इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इन सब जगहों पे भाई साहब इसका प्रैक्टिसिंग होता है. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. तो काफी सारा heavy rainfall होता है यहाँ पे और बहुत जल्दी vegetation आ जाता है. ठीक है, quick regeneration of vegetation. ठीक है, a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. तो एक पूरे plot of land को clear किया जाता है by cutting the trees and obviously burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like, ठीक है, the ashes are then mixed with the soil and crops like maize, ठीक है, yam, ठीक है, these ashes are then mixed with the soil and crops like potatoes, ठीक है, cassava. The ashes are then mixed with the soil and crops like, after the soil loses its fertility the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. तो एक बार भाई साहब सॉइल की फर्टिलिटी चलिए, देखो
कभी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो सॉइल की एक फर्टिलिटी होती है, सॉइल की उपजाऊता होती है। तो एक बार वो सॉइल का उपजाऊता यूज हो गया तो लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं वहां पे करने के लिए, ठीक है। कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा होता है, एक बार कल्टीवेशन हो गया, जला बुला के फिर आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार कल्टीवेशन हो गया, जो भी बचेगा उसको जला बुला के आगे बढ़ो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। मतलब यहाँ पे एक जमीन को आपने क्लियर किया, थोड़े देर के लिए उसको क्रॉप कल्टीवेशन में यूज किया, जैसे उसका यूज खत्म हो गया आप उसको जला बुलाकर आगे बढ़ गए, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Nomadic herding, it is practiced in the semi-arid and the arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir. इन जगहों पे भाई साहब ये प्रैक्टिस होता है nomadic herding, ठीक है। In this type of farming, herdsmen move from place to place. तो herdsmen basically क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं with their animals for fodder and water along with defined routes, ठीक है। तो herdsmen मतलब जो आपके भाई साहब ये they move from place to place with their animals, अपने animals के साथ भाई साहब मूव कर रहे हैं for fodder मतलब खाना and water along defined routes, ठीक है। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrains, ठीक है। तो इस आपका भाई साहब क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स होते हैं, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो टेरेन के हिसाब से ये मूवमेंट चालू रहता है। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो ज्यादा करके इन चरवाहों के साथ ये सारे एनिमल्स रहते हैं, इनकी रेयरिंग होती है, इनको वुल के लिए रियर किया जाता है, इनके मीट के लिए रियर किया जाता है, इनके मिल्क के लिए इनको यूज किया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे प्रोवाइड, ठीक है। So these camel भाई साहब आपका याक हो गया, ठीक है, this is basically yak. Then we have basically goat. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families, ठीक है। Sheep, camel, yak and goats, तो इससे milk produce होता है भाई साहब, meat produce होता है, then wool is also produced and we have hides, ठीक है, ये आपके skin hides होते हैं which are basically produced, ठीक है। Commercial grain farming. Commercial grain farming, in a commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in market, ठीक है। तो क्रॉप्स का ग्रोथ होता है और एनिमल्स को रियरिंग की जाती है, एनिमल्स को भाई साहब रियरिंग किया जाता है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज वेरी लार्ज। तो जितना एरिया में कल्टिवेशन हो रहा है और जितना आपका कैपिटल लग रहा है दैट इज ह्यूज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन्स। ज्यादा करके मशीन्स काम करते हैं, बड़े बड़े लैंड पे आपके फार्मिंग मशीन्स होते हैं जिनको यूज में लाया जाता है, मोस्ट ऑफ दैट, ठीक है। ओके, कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे आपके भाई साहब कमर्शियल फार्मिंग में होते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्म क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो क्रॉप्स का भाई साहब कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रोथ होता है, ठीक है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स, ठीक है, व्हीट और मेज ग्रोन होता है, ठीक है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स, ठीक है। मेजर एरियाज में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। दीज एरियाज आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, ठीक है। तो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड है और इनके लार्ज फार्म्स होते हैं स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये ऐसे जगहों पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। सिवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, ठीक है, कभी कभी सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है भाई साहब, कभी आप फार्मिंग कर रहे हैं, कभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घास उगाकर कैटल को रेयर करवा रहे हैं, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, South East Australia, New Zealand and South Africa, ठीक है, इन जगहों पे भाई साहब ये प्रैक्टिस होता है। Plantations farming, the main crops grown in the plantation farming are tea. Plantations होते हैं, ठीक है, तो बहुत वजह से प्लांटेशन फार्मिंग में टी होता है, कॉफी होता है। The main crops grown in plantation farming are tea, coffee. What else people? We will have sugar cane, ठीक है, sugar cane is also plantation farming. Cashew, काजू मतलब, ठीक है, that is also an example of plantation farming. Rubber, ठीक है, rubber is also an example of plantation farming. Banana, ठीक है, again example of plantation farming, ठीक है। Cotton, plantation farming.
So all these are basically plantation farming. Large amount of labor and capital are required. तो आपका large amount of labor और capital दोनों की requirement होती है, ठीक है. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. तो फार्म में ही प्रैक्टिस हो सकता है या नियरबाई फैक्ट्रीज में भी ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. ठीक है, तो ऐसे फार्मिंग के लिए major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. ठीक है, ये कुछ examples हो गए. ब्राजील हो गया, भाई साहब इंडिया. क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जितने भी क्रॉप्स हैं वो क्या सप्लाई कर रहे हैं? क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं, ठीक है. मेजर फूड क्रॉप्स आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? राइस, मेज, मिलेट्स, ठीक है. फाइबर क्रॉप्स क्या क्या हो जाएंगे? जूट, कॉटन, ठीक है. इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी, कॉफी एक्सेट्रा, ठीक है. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे जगहों पे राइस आपका मेजर फूड क्रॉप है, ठीक है. राइस इज द मेजर फूड. इट इज अ स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में स्टेपल डाइट है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है. सो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई साहब? उमस, ठीक है. आपका एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. एंड ऑब्वियसली रेनफॉल. इन सारी चीजों की भाई साहब राइस को जरूरत पड़ती है. इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्लेई सॉइल. अलुवियल सॉइल मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे जो रिवर्स आ रहे हैं माउंटेन से होते हुए वो फ्लो कर रहे हैं और वो अपने साथ लाते हैं सिल्ट, ठीक है, गुड सॉइल कंटेंट, और ये डिपॉजिट होता रहता है. और ये डिपोजिशन सदियों तक चलता रहता है, बहुत सालों तक चलता रहता है, ठीक है. सो मेजर क्रॉप्स, इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्लेई सॉइल व्हिच कैन रिटेन वाटर. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. 2 to 3 crops are grown in a year. So 2 से 3 crops आपके grown होते हैं. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है भाई साहब wheat की. It thrives best in well drained loamy soil. तो बेस्ट आपका well drained loamy soil में ये प्रोड्यूस होता है. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it grows in winter. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil, ठीक है. तो इनको coarse grains बोलते हैं. मिलेट्स मतलब होते हैं आपके coarse grains, और ये less fertile soil पे भी आराम से grow हो सकते हैं, ठीक है. So it is a hardy crop that needs low rainfall and high to, ठीक है. They are also grown coarse and sandy soils में भी moderate temperature and adequate rainfall से ये grow हो जाएंगे, ठीक है. ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ठीक है. These all are grown. इसमें ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन मेनी पार्ट्स इन इंडिया एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट इन मेनी इंडियन फैमिलीज, ठीक है. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, ठीक है. ये दूसरे कंट्रीज हैं. मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. तो मेज को भाई साहब ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. मॉडरेट रेनफॉल की, मॉडरेट टेम्परेचर की, रेनफॉल की, और काफी सारे सनशाइन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है. It needs well drained fertile soils, ठीक है. आपका अच्छा खासा पानी जमना नहीं चाहिए. well drained मतलब जहां पे आप मेज या भुट्टा उगाएंगे वहां पे पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए. आई तुम किधर हो, ठीक है. well drained fertile soils. ओके, मेज इज ग्रोन. कहां पे ग्रोन होता है भाई साहब? कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इन सब जगहों पे ग्रो होता है. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, जैसे हमारे महाराष्ट्र का क्लाइमेट है, ठीक है. लाइट रेनफॉल से हेवी रेनफॉल भी ये कर सकता है. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. कॉटन का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब समझते हैं कोहरा, ठीक है. आपने कभी कोहरा देखा है? अब हाँ, फॉग, ठीक है. पहाड़ी एरियाओं में देखोगे आप, ठीक है. ये कोहरा नहीं होना चाहिए. कम से कम 210 दिन. पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365. 210 या 210 से ज्यादा दिन आपका फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, अगर कॉटन उगाना है तो. It will need that much amount of frost free days, ठीक है, and bright sunshine for its growth. और हमारे महाराष्ट्र में तो ज्यादा जगहों पे कोहरा होता नहीं है, ठीक है. तो that is providing an ideal situation, ठीक है. It grows best on black and alluvial soil. तो हमारा महाराष्ट्र का जैसे सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कॉटन के लिए बेस्ट है, ठीक है. इट इज बेस्ट. ओके ओके ओके. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton, ठीक है.
इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन आपका भाई साहब जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री है, ठीक है, कपड़ों की जो इंडस्ट्री है उसके लिए मेन रॉ मटेरियल है, ठीक है, इज द मेन रॉ मटेरियल। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सॉइल। जूट जो है भाई साहब आपका, इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। सबसे ज्यादा ये कहां पे होता है, अलूवियल सॉइल में, एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की, हेवी रेनफॉल की, एज वेल एज ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, इसका ग्रोथ ज्यादा करके ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, ठीक है। बांग्लादेश is the leading producer of jute followed by India. India and Bangladesh are the leading producers of jute. तो आपके गोनी के बैग बनते हैं, देखो ये ऐसा जूट होता है, ठीक है, ऐसे बैग्स बनते हैं। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। गोनी जो बनता है ना आपका, आलू वगैरह जिसमें रखा जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो इसको वार्म और वेट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जिसमें पानी ना जमा हो, ठीक है, लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राजील भाई साहब आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी के लिए, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ऐसे देखो टी ग्रो होता है, ऐसे प्लांटेशंस में ग्रो होता है ये, ठीक है, दिस इज ग्रोन इन प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, ठीक है। तो एक कूल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, मतलब अच्छा खासा पानी लगता है, लेकिन ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी जमा नहीं होना चाहिए, टेंडर लीव्स। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। टी की रिक्वायरमेंट है। लेबर इज लार्ज इन नंबर रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो आपका भाई साहब ये टी लीव्स को पिक करना पड़ता है, पूरे पेड़ का लीव्स नहीं होता है, सिर्फ ऊपर जो लीव्स होते हैं उनको प्लग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टी लीव्स होते हैं ऐसे बास्केट्स में। ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, मतलब काफी ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, काफी ज्यादा भारी मात्रा में लेबर की रिक्वायरमेंट है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जस्ट वन मिनट। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। ओके, सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of, तो यहाँ पे वैसा फार्म प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, in order to meet the growing demand of increasing population, right? ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हम भाई साहब बढ़ते 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 135 करोड़ के हो गए हैं। तो अगर इंडिया एज अ कंट्री हम देखा जाए तो देश हैज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, और इस फूड की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हमको बहुत एक्सटेंसिवली क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, मतलब आप क्रॉपिंग एरिया को बढ़ाइए, लेकिन अगर क्रॉपिंग एरिया को हम बढ़ाएंगे तो फिर हमारा रेसिडेंशियल, फैक्ट्री एरिया, ट्रांसपोर्ट एरिया ये सब कम हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, क्रॉपिंग एरिया में प्रोडक्शन बढ़ाइए, ठीक है। देखो एक तरीका क्या है, क्रॉपिंग एरिया को बढ़ाओ, लेकिन अगर क्रॉपिंग एरिया को आप बढ़ाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स, रेलवेज ये कहाँ बनेंगे, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि क्रॉपिंग एरिया को सेम रखिए, वहां पे ज्यादा क्रॉप्स बढ़ाइए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं भाई साहब, आज की तारीख में हम ऐसा हाइब्रिड क्रॉप्स लाते हैं जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दीज आर नोन एज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। सो दीज आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड बाय हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक और एस्पेक्ट क्या है भाई साहब, मैकेनाइजेशन। मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, वी आर बेसिकली यूजिंग मशीनरी, ठीक है, लाइक आपके दीज आर बेसिकली ट्रैक्टर्स,
और ट्रैक्टर्स में बहुत बड़े एरिया को हम बहुत ताबड़तोड़ भाई साहब मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम क्या है भाई साहब? फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पे भाई साहब ये डेवलप हो रहा है एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज with large populations usually practice intensive agriculture। so जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जिनके बहुत बड़े पॉपुलेशंस होते हैं, ज्यादा करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, ठीक है। जहां पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं स्मॉल होल्डिंग्स पे, ज्यादा करके किसके लिए? सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए। दे आर मेनली डन फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो अ फार्म इन इंडिया, देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुन्ना लाल is a small farmer in this village who has a farmland of about how much 1.5 hectares, ठीक है। तो मुन्ना लाल अपने विशाल का दोस्त है। His house is in the main village। तो ये भाई साहब मेन विलेज में इनका घर है, ठीक है, ओके। तो अभी मुन्ना लाल क्या कर रहे हैं? He purchases high yielding varieties। हाई yielding varieties मतलब क्या होते हैं? ऐसे सीड्स होते हैं, जैसे समझो कि अगर कोई पहले का सीड यूज होता था और अभी का जो हाई yielding वैरायटी है, पहले का फॉर्मर सीड है ये लेट्स से, और ये हाई yielding वैरायटी है। पहले वाले सीड में 6 महीने लग जाते थे, ठीक है, प्लांट को उगने में। इसमें भाई साहब 3 महीने में बात बन रही है। तो खेती आप पहले वाले सीड में कितनी बार कर सकते हो? साल में 2 बार। और यहाँ पे कितनी बार कर सकते हो भाई साहब? 4 बार, ठीक है, ओके। पहले वाले एक क्रॉप में भाई साहब आपको समझ लो 10 ग्रेन्स के दाने मिलते थे। अब की हाई यील्डिंग वैरायटी में कितना मिल रहा है भाई साहब? 50 ग्रेन्स के दाने मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आपका यील्ड बढ़ रहा है, ये इनको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। पहले वाले क्रॉप में क्या होता था? थोड़ा सा भाई साहब टेम्परेचर बढ़ गया, प्लांट्स मर जाएंगे। यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेदर में ज्यादा बारिश हो गई तो भी प्लांट्स मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाई साहब नहीं होगा। पहले वाले में क्या होता था? जैसे समझ लो पेस्ट होते हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, थोड़ा सा लग गया खराब हो जाएगा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी में आपका प्रोडक्शन जल्दी होता है, ज्यादा होता है, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन होता है, और प्लस डिजीज फ्री होता है, ठीक है। इसीलिए आपका हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या हो रहा है? ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses, ठीक है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing, ठीक है। तो आपके देखो ट्रैक्टर को यूज करने से क्या हो रहा है? समय बच रहा है आपका। ये 4 दिन लगाएगा पूरे फील्ड को तैयार करने में, ये बस आप 2 घंटे में तैयार कर देगा, ठीक है। सो थोड़ा सा पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन फील्ड आपका जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन नो टाइम, हियर इट विल टेक मच मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच इट टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट द फील्ड। तो ट्यूबवेल से भाई साहब रेंट पे पानी लाता है, ट्यूबवेल से भाई साहब कुएं से पानी निकलता है, और इससे देखो कौन से टाइप का है? स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है ये। स्प्रिंकलिंग, ज्यादा पानी भी नहीं लगेगा, पानी का वेस्टेज भी कम होगा, ठीक है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 buffaloes एंड अ फ्यू हेन्स। तो ये आपके एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस करता है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। तो सिर्फ एक ही इनकम का जरिया नहीं है, अलग अलग इनकम के जरिए हैं, ठीक है, ओके। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भाई साहब ये मेंबर है, और कौन सा खाना एनिमल्स को खिलाना है, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइवस्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये सारे जितने भी एनिमल हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो उसको ऑटोमेटिकली एडवाइस में मिल ही जाता है, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर मिल्क, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई कौन से? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड इंप्लीमेंट्स। तो कभी कभी वो छोटे मोटे लोन बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता रहता है। He sells his produce in the mandi located in the nearby town, ठीक है। Since majority of the farmers do not have storage facilities, ज्यादा करके farmers का storage facilities नहीं होता है, they are forced to sell the produce
even when the market is not favorable to them. ठीक है, तो they are forced to sell the produce, they have to sell their produce. जब मार्केट उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो भी आपको बेचना पड़ेगा. ठीक है. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, क्योंकि देखो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, क्या आप पोटैटोज को पूरे साल उगा सकते हैं? नहीं. क्या आप वीट को पूरे साल उगा सकते हैं? नहीं. क्या आप राइस को पूरे साल उगा सकते हैं? नहीं. ऑब्वियसली ऑल द क्रॉप्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑल द ईयर राउंड. So you have to have adequate storage facilities to ensure that whatever crops have been produced, they are reaching the people of India throughout the year. ठीक है, पूरे साल भर में वो पहुंचते रहे लोगों तक, और इसीलिए आपके स्टोरेज फैसिलिटीज बेस्ट होने चाहिए. ठीक है, आज कौन गायब है? हर्ष. और हाँ, the average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. ठीक है, a typical farm size in USA, अमेरिका में 250 हेक्टेयर्स है. The farmer generally resides in the farm. ठीक है, some of the major crops grown are corn, ठीक है, सोयाबीन, wheat, ठीक है, cotton, sugar beet. ठीक है, Joe Horan, a farmer in Midwest USA in Iowa state, owns about 300 hectares of land. ठीक है, so he's a farmer. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. Adequate measures are taken. वहाँ पे भाई साहब हेलीकॉप्टर से ये स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है, सीड्स छिड़के जाते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं. ठीक है, तो adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. पेस्टिसाइड्स छिड़का जा रहा है. ठीक है, from time to time he sends soil samples to a soil testing lab to check whether the nutrients are sufficient or not. तो soil testing labs में भेजा जाता है, soil की टेस्टिंग की जाती है कि ये soil में और fertilizers डालना है कि ऐसा ही रखना है इसको. ठीक है, so the results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. ठीक है, his computer is linked to a satellite which gives him a precise picture of his field. ठीक है, this helps him to use chemical fertilizers and pesticides whenever and wherever they are required. तो ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है जहाँ पे फार्मिंग बड़े टेक्नोलॉजिकल इनपुट से चल रहा है. He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations. ठीक है, सीड ड्रिल्स, लेवलर होते हैं भाई साहब, कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं, थ्रेशर्स होते हैं. ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज. तो ऐसे ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होते हैं जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. ठीक है, द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. ठीक है, सो काफी सारा भाई साहब, मतलब उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा है. तो अगर हमको एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा. ठीक है, that is something that we have to basically use. So this completes the chapter people on agriculture. Agriculture. Agriculture is the art and science of raising plant life from the soil. Agriculture is one of the oldest activities of humankind, and today it includes not only cultivation of crops but also domestication of animals. Agriculture is the most basic resource as it provides food, clothing and shelter to mankind. Study at a glance. Agriculture, types of agriculture, major crops and development of agriculture. Agriculture. Do you know when humans started practicing agriculture? Humans started practicing agriculture in the ancient period, where early humans gathered nuts, fruits and roots from forests and hunted animals to satisfy hunger. Gradually, with the development of better tools and techniques, they learned to make better use of the available resources. They learned to grow crops. And that was the beginning of agriculture. Now, let us know the meaning of agriculture. The word agriculture is derived from the Latin words ager or agri, meaning cultivation or tilling of soil.
Agriculture thus refers to the cultivation of soil for growing crops and rearing of livestock. Crops. Crops are those plant species which have been selected by humans to be cultivated for their use. Example: wheat, rice, maize, etc. Livestock. Livestock includes animals like cattle, sheep and goat, and birds, example chicken, that are reared for human use. In short, agriculture includes the utilities like fishing, livestock, cultivation of crops, forestry, etc. Do you know, India is a unique country in terms of agriculture. It is because of the following: vast expanse of level land, rich soils, wide climatic variations, ample sunshine, and long growing season. Let us now understand the types of tools used by farmers in early days and in modern times. The earliest farmers used only simple tools: digging sticks, hoes, and sickles. Gradually, ox-drawn plows were introduced. Tractors with multiple attachments performing different functions were then introduced. Types of agriculture. Now we will study about different types of agriculture and their characteristic features in detail. On the basis of agricultural practices, which include size of the farm, tools and techniques used, the types of livestock kept, and the proportion of the output retained by the farmer, agriculture may be broadly divided into subsistence agriculture, commercial agriculture, extensive farming, mixed farming, plantation agriculture. Subsistence agriculture. This type of agriculture is practiced mainly to meet the requirements of the local community. Subsistence agriculture can be further classified as intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. Intensive agriculture. This type of farming is done on a permanent basis on a particular piece of land. The size of the farm is usually small. The use of animals and manual labor is maximum. The farmers settle permanently and do not move from place to place. They keep on cultivating on the same land holding year after year. The land is cultivated intensively so as to grow 2 or 3 crops a year. This type of farming is practiced in densely populated parts of the world, mainly in Southeast Asian countries like India, China, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, North Korea, South Korea, Japan, etc. A variety of crops are usually grown by farmers because most of the produce is used for their own consumption. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Nomadic herding. It is practiced by those people who rear cattle, sheep, goats, camels, and yaks. These animals are dependent
on the natural vegetation in the area. It is prevalent in the Sahara, East and Southwest Africa, parts of Western and Central Asia, and Northern Eurasia. Shifting cultivation. This type of farming is practiced by cutting a patch of forest or by burning bushes, etc. The patch of land is cleared and then cultivated. It is also known as slash and burn agriculture. Within India, shifting agriculture or jhum is practiced in the hill tracts of eastern and northeastern India. In the Himalayan region of the northeast, the agricultural practice of shifting cultivation is also known as jhum cultivation. This type of farming is practiced by tribal people. These people do not lead a settled life. The land is prepared for cultivation by felling trees and burning them. Shifting agriculture is known by different names in different countries. Jhuming in northeast India, Ladang in Indonesia, Milpa in Central America, Kengin in Philippines, Ray in Vietnam, Roca in Brazil, etc. In India, shifting farming is practiced by the tribal people in parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand and northeast Indian states. Commercial agriculture. The main purpose is to sell the produce in the market. Therefore, one particular crop suitable for the region is selected by the farmer. It is called crop specialization. This type of agriculture has two main forms: commercial grain farming and plantation agriculture. Commercial grain farming is mostly practiced in the middle latitudes. This type of farming is done on sparsely or moderately populated parts of the world. Wheat is the most important crop grown in India. Farms are of big sizes, spreading over hundreds of hectares. Most of the work on the farms are done by machines. Tractors, levelers, seed drills and combined harvesters. Extensive agriculture. Compared to intensive agriculture, the amount of capital and labor applied per unit area is relatively small here. It is therefore called extensive agriculture. The main areas where extensive agriculture is done are the steppelands of Russia, prairies of Canada and US, pampas of Argentina, and downs of Australia. Wheat is the most important crop. Other crops are corn, barley, oats and cotton. Because of less labor and more mechanization, per person yields are quite high. Mixed farming. It is that practice of farming in which crops are grown on the farms and cattle are also reared side by side. This type of farming is quite popular where the size of the farm is moderate. Cereal crops like wheat, maize and barley are grown, but along with that, root crops like potatoes and turnips are also grown. The animal dung is used for fertilizing the soil, cattle for beef, sheep for mutton, and poultry are reared by the farmers. Mixed farming provides greater security than cultivating
simple crop over a large area. Farming is done intensively and efforts are made to produce high yields per hectare. Necessary machines are used on the farms. This type of farming is practiced in almost all countries of Europe, Russia, Australia, New Zealand, USA and India. Plantation agriculture. This is basically a commercial type of farming and a monoculture. It is found in the tropical region. Plantation agriculture is that practice of agriculture which is a specialization of a single crop over large estates of farms where most of the work is done on scientific basis. It is a well-managed and organized system of agriculture. Crops like rubber, tea and coffee are grown on large plantations. Large amount of labor and capital are required for such plantations. Major crops. Major crops are classified into food crops, commercial crops and beverage crops. Food crops. Food crops include all cereals, pulses, oil seeds, beverages, etc. Rice, wheat, corn or maize and millet are the main cereals. Rice. Rice is the chief food crop of the world. It is obtained from paddy which is processed in mills. Bran and husk are used as fodder and also as fuel. Geographical requirements. Cultivation of rice requires high temperature of over 20 degrees Celsius to germinate, bloom and mature. Rainfall of 100 centimeters to 150 centimeters is required. Rice is grown in deltas, river valleys and coastal plains. It is cultivated in terraced fields. Rice grows well on loamy and silty soil which are alluvial and fertile. Production areas: India, West Bengal, Bihar, Assam, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab. World: China, India, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Philippines, Japan, etc. Wheat. Wheat is another major food crop which is high in protein and carbohydrate contents. Geographical requirements. Loam is the most suitable soil for its cultivation. It requires cool weather and a rainfall between 40 centimeters to 75 centimeters. The crop also grows well on black soil. At the time of its sowing, wheat requires cool and dry weather. During growth, cool and wet. And at the time of ripening and harvesting, hot and dry. Frost is harmful for wheat cultivation. Production areas: India, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Bihar are major wheat producing states of India. World: Russia, Ukraine, the United States of America, Canada, Argentina, China and India are important producers of wheat. Maize. Maize is known as Makka in India, corn in the United States of America and Indian corn in Europe. Maize is used as food grain and as fodder. Geographical requirements. Its growth requires sufficient sunlight and moisture. Drought condition during the cropping period may destroy the crop altogether.
Stagnant water in the maize fields is harmful to plants. Production areas: India, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh. World: China, Brazil, Mexico and Argentina. Millets: they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jawar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. Commercial crops. Commercial crops include jute, cotton, sugarcane, rubber, etc. Jute. Jute is a fiber crop. Jute fiber is obtained from the bark of the jute plant stem. The jute plant originated in the Indian subcontinent. Geographical requirements. It grows best in well-drained sandy loam and requires warm and humid climate. Jute requires high temperature of 30 degrees Celsius and heavy rainfall of more than 150 centimeters. Production areas: India, West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Meghalaya, Tripura and Uttar Pradesh. World: Southeast Asia, India, Bangladesh and China. Cotton. Cotton is one of the world's leading agricultural crops used to produce clothes. It is an important fiber crop. The fiber is used in making cloth and its seeds give us edible oil. Geographical requirements. Cotton is grown in the temperatures of more than 21 degrees Celsius. It requires rainfall between 60 and 100 centimeters. At the time of ripening, it requires cloud-free sunny days. Alluvial and black soils are best suited for its cultivation. Production areas: India, Maharashtra, Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat and Punjab. World: China, USA, Russia, India, Pakistan and Brazil are the leading producers. Beverage crops. Beverage crops include tea and coffee. Tea. Tea is made from the young leaves of the tea plant. It has many varieties. Small-leaved China tea plants and large-leaved Assam tea plants are popular all over the world. Geographical requirements. Tea plants require moderate temperature of about 25 degrees Celsius and a rainfall of about 200 centimeters per year. Well-drained, hilly slopes grow most of the tea of our country. Production areas: India, Assam, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. World: Sri Lanka, China, Japan and Indonesia. Coffee. Coffee is the second largest beverage after tea. The coffee plants are cultivated for seeds and beans which are roasted and sold for brewing coffee. There are two types of coffee plants: Coffee Arabica or Mocha and Coffee Robusta. Geographical requirements. The coffee plant requires warm climate
and moderate rainfall. Both strong sunshine and snowfall are harmful to the plant. During its growth, coffee plant requires rainfall of 100 centimeters to 150 centimeters and temperature between 15 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Well-drained, sloppy soil is essential as stagnant water destroys the coffee plants. Production areas: India, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. World: Brazil and Colombia. Development of agriculture. With the growth of population in the world, the demand for food and other requirements also grew. With high-yielding varieties of seeds and application of fertilizers, pesticides, insecticides and weedicides, agricultural production has increased worldwide. We can compare the agricultural development of developed and developing countries better with the help of the two case studies of farms. One from the USA and the other from India. Agricultural development in India. Do you know that India has the highest percentage of land under cultivation in the world? Land reforms were introduced by the government to improve agriculture. Under this, the government took lands of big landowners away and redistributed to landless laborers. Modern methods of cultivation were introduced in the country, like better infrastructure facilities such as irrigation, electricity and transportation. Agricultural equipments such as tractors, threshers and harvesters, high-yielding variety of seeds, fertilizers, pesticides and electricity were made available to farmers at less than the actual price. Green Revolution was implemented to improve agricultural production. Increase in the production of cereals as a result of high-yielding varieties of seeds, fertilizers and irrigation is known as Green Revolution. India is a major producer of cereals such as rice and wheat, oilseeds such as groundnut, mustard and sunflower, vegetables and fruits. 1/10 of fruits produced in the world are from India, notable being mango and banana. India has made significant progress in milk production. It is the largest producers of milk in the world. A farm in India, a case study. The owner of the farm generally has his residence in the main village. The entire land is divided into small plots. Different crops are grown in these plots. Rice is the main crop, which is grown during rainy season. The farmer also has a few livestock: cows, buffaloes, bulls, a few hens, roosters and chickens. More than 3/4 of the cropped area is devoted to food crops like rice, wheat, etc. With the exception of a few rich farmers, majority of the farmers belong to the category of intensive subsistence farming. A farm in the USA, a case study. Farmers in the USA generally reside in the farms. The average size of the plots in USA is much larger than that of an Indian farm. Agriculture in America is managed very efficiently and largely with the help of modern machines.
they rely much more on technology than on manual labor. Most of the farmers produce largely for exports as the soil is quite fertile. Wheat, corn, cotton and tobacco are the traditional crops grown in the US, but soya beans, sunflower and peanuts are also largely grown. An American farmer in general heavily depends on chemical fertilizers and pesticides. He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations. Summary: agriculture is the oldest and most widely adopted occupation of humans. Agriculture is the most basic resource as it provides man with all his needs. Today, we have modernized agriculture and have diversified it into different types like shifting cultivation, intensive cultivation, extensive agriculture, plantation agriculture, and mixed farming. Some of the major crops which are produced in most parts of the world are rice, wheat, sugarcane, cotton, jute, tea and coffee. Though agriculture is the main occupation of the people of India, due to the pressure of population, most of the farm holding is meager. The government is making efforts to bring in improved methods of farming to help the farmers. Though barely 2% of the population in the US engage in agriculture, yet it produces enough to surplus for export. This is because agriculture is carried out on an extensive scale with heavy machinery. The farmers in the US can also get good revenue. More than 3/4 of the cropped area is devoted to food crops.